post that, he will, of course, be going to the airport and once again inaugurating the newly named airport as well. And the frequency of the flights that have also been attached is going to be another highlight of the tomorrow's event, when we will see passengers, in fact, from Ayodhya already having booked several of their flights right after the Prime Minister leaves around 1 p.m. Is what we've been given to understand. So this is the kind of enthusiasm, the excitement and the arrangements that we see on the ground, and rightly so, the Chief Minister being in Ayodhya, he was expected to be here even yesterday, because he was expected to carry out the review meetings 2 days prior to the Prime Minister's arrival, that is yesterday and today as well. But because of a bad weather condition, he could not take off from Lucknow and could not arrive in Ayodhya on time. And then that's why he had to carry out the entire review meeting virtually yesterday. We had seen at around 5 p.m. when the review meeting had been carried out with the authorities, with the collector, the mayor, and also with the trust members as well. And now today we are looking at the Chief Minister Yogi Adityanath having arrived in Ayodhya and having met with the authorities, having met with the officials. Gujarat is where ideas turn into industries. And for 2 decades, Vibrant Gujarat Global Summit has been the dynamic platform from where the state's entrepreneurial spirit emerges. Through its visionary startup policy, combined with strategic initiatives like Gujarat Startup and Innovation Scheme, iHub and iCreate, Gujarat has propelled its startups to new heights and is today recognized as the startup capital of India. And with that distinction, Gujarat's transformative vision for emerging entrepreneurs is propelling India towards achieving the vision of Viksit Bharat at 2047. Be a part of Gujarat's progressive startup ecosystem at Vibrant Gujarat Global Summit 2024. Gateway to the future. हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। 3 से 4 व्हीलर में अपग्रेड तो करना है, पर इसमें से क्या खास बात है? इसमें एक खासियत हो तो बताएं। टाटा इस गोल्ड पेट्रोल 6 में है दमदार इंजन जो दे बढ़िया पिकअप, बड़ी और स्ट्रॉन्ग लोड बॉडी और मेंटेनेंस एकदम कम। तो अब सोचो, समझो और टाटा इस गोल्ड पेट्रोल 6 लो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो रही है।
प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग और भर्ती बोर्ड तेजी के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने से आज प्रदेश के युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना साकार हो रहा है। मेरा नाम राम प्रकाश शर्मा है। मुझे जेल विभाग में जॉब मिली है, जेल वार्डर के पद पे हूँ मैं। हम लोगों ने सबसे पहले लिखित परीक्षा दी है, उसके बाद में कट ऑफ मेरिट वगैरह क्लियर करने के बाद में फिर हमने शारीरिक दक्षता क्लियर करी, DVPST हुआ, उसके बाद में फिर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, फिर मेरिट हुई, इसके बाद हम यहाँ आए। रोजगार सृजन की दिशा में नित नए कदम बढ़ा रही योगी सरकार ने प्रदेश में सरकारी नौकरी की नियुक्ति में एक रिकॉर्ड कायम किया है। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। Massive breakthrough after 12 years. Centre and ULFA to ink a peace deal shortly. Mega reject in the JDU ahead of 2024 elections. Lalan Singh steps down. Nitish Kumar takes over as the chief. India divided over prime ministerial pace hurdle. Siddaramaiah pitches for Rahul Gandhi now. Therefore, they have not been able to come up with logo, with neta, with niti. There's only confusion and contradiction in their alliance, and that is what is evident. Sources suggest seat sharing discussion likely in January. BJP fires Indi Jodo Yatra attack. Uttar Pradesh Minister Yogi Naval and Ayodhya takes stock of the preparedness. And all eyes on Prime Minister's mega Ayodhya visit tomorrow, set to unveil mega projects ahead of inauguration. So it's going to be a historic peace deal, viewers, that is going to be signed in a short while from now. This is the Centre and the ULFA deal that is going to be signed today. It's a big breakthrough that is going to take place after 12 long years for the benefit of the people of Assam, and not just Assam, of course, also for the people of the Northeast. Now, the United Liberation Front of Assam, that is ULFA, the pro-talk faction of the ULFA, and the Centre is going to sign this peace deal. And we will get you more details about this in a short while from now. It is going to, of course, bring a significant breakthrough in the decades-old problem of insurgency in the Northeast. It's a tripartite peace accord between the pro-talks faction, viewers of the ULFA, and the central and Assam governments will be signing this deal today as it aims to end the decades-old insurgency in the state of Assam. For more on this, I'm joined by my colleague Anuruddha from Guwahati. Anuruddha, of course, it's going to be a very historic peace deal, isn't it? Tell us about this deal and quite the key points, as in what is the most important point to actually, it has taken 12 years. We've been, the people of Assam have been struggling, but on the political level also, on the ground level also, there have been various hurdles. But this is going to be a deal that is going to bring about a sense of peace in Assam and in Northeast. Take us through the key details of this accord. Yes, Rakshita, this, if we see at the 12-year context, then it is a very less time compared to the
43-year-long history of violence that the state of Assam has gone through because of insurgency. Starting from 1979 till that, a lot of violence have taken place in the state of Assam, and in most of them the ULFA is directly or indirectly linked. And as there has been several attempts also in the past to bring ULFA on the table of talks, there was a lack in political will to reach out a conclusive solution which we have witnessed very lately in terms of the Northeast or Assam is concerned. When in 2011 the talks were formally initiated, there was no certain agenda or point of talks on which the talks can proceed. It was only in the year 2016-17 when a formal agreement was made as to on what basis the talks will proceed between the center, the government and the government of Assam and the ULFA. It is going to be a tripartite talk, and that is the reason why a tripartite agreement was in 16-17, so that the talks can proceed in a conclusive manner, so that a solution can be achieved. And after a lot of deliberation, all these three parties went through. Today we are here at a historic moment when the peace agreement will be inked formally between the government of India, the government of Assam and the ULFA. And there are a lot of aspirations for the people of Assam as far as this pact is concerned. Their hopes of each and everyone is very high. But yes, let me tell that as per our sources, many contentious issues such as NRC, such as the citizenship issues have been kept out of this agreement to be inked today. However, on the development front, there are many new things which the state of Assam will be witnessing. We are getting to know from our sources that a mega financial package for the state of Assam, a mega development package is likely to be announced. Apart from that, there are several agendas on which talks had taken place. This also include the scheduled tribe status for the 6 ethnic communities of the state, and these are all aspirations and what the people of the state have been expecting to hear from today. But yes, in a short while from now, exactly after half an hour, everything will be clear as what the government of India and the center have decided on as far as these talks are concerned. And we are hopeful that this talks will bring in a permanent solution to the violence in the region, because ULFA, as far as the ULFA is concerned, ULFA has been one of the oldest outfit in the region, and they have been also one of the major groups, and the peace pact signed between the ULFA and the government of Assam and the central government will pave way for other organizations, other smaller organizations to join the table of talks with the government, so that a permanent solution can be reached not only for the state of Assam but for the entire Northeast. Rakshita. In fact, Anuruddha, we are seeing and we're playing those graphics also where a Prime Minister in his tenure, in the total number of years that he's been as Prime Minister, the Northeast had actually got a lot of push, not just development, but the peace push, which has a lot of challenges. And, be it Bodo Accord and several other accords that we have just listed out, they have taken place for the benefit of a Northeast. His Act East policy, his Northeast policy has been a very important point of focus of both the governments, be it Modi one, the first term or even this second term. But tell us about why it has taken 12 years, because there have been a lot of challenges on the political front as well, and also from the stakeholders also. So take us through what all has happened up until now, and why did it take 12 long years for this push, for this big breakthrough in Assam?
Yes, Rakshita, your question takes me to way back to 2011 when when the ULFA was brought on the table of talks. In the year 2011, when the UPA was in power and the Home Minister of this country was P. Chidambaram, at that time there was a historic blunder that was committed by the center, and it was keeping Paresh Barua completely out of the talks. Later on, though there had been several attempts, though he never joined the table of talks, but if there are viewpoints in Assam that if in 2011 itself a concrete effort was made to bring in Paresh Barua on the table of talks, then things would have been completely different. But yes, even after starting the peace process in 2011 also, only a few meetings actually took place in the state, and there was no concrete meeting which could have led to a positive solution as far as the conflict between the ULFA and the government of India is concerned. And there was no concrete political outreach by the leadership in Delhi in order to pave way for the talks to go for a conclusive solution. But things changed later towards the end of 2015-16, and in 2016 when the center initiated extradition of Anup Sethia from Bangladesh, and eventually after Anup Sethia's deportation from Bangladesh to India, in fact, Prime Minister Narendra Modi also himself thanked Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina for the extradition. And thereafter, after Anup Sethia's arrival from Bangladesh, the talks took a smooth takeoff. And today we are here at this juncture when this historic pact will be signed in Delhi. Rakshita. Right, and of course, it's of course a very significant development that is going to take place, and we will be shortly getting us. We'll get you more details about that, viewers, in a short while from now. That this deal is going to be signed. The Home Minister will also be present while this peace accord is signed. But right now, we'll be moving on to some other news, and if this is the news coming in from Ayodhya, of course, remember Yogi Adityanath, the Chief Minister, is in the temple town of Ayodhya, and he is going to review all the preparations that is going to take place for the events tomorrow. Remember, the Ayodhya Dham railway station and the Ayodhya airport, that is the Maharishi Valmiki Airport in Ayodhya, is going to be inaugurated tomorrow, and there's going to be thousands of crore rupees of projects that will be announced by the Prime Minister. So we will get you what the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh had to say ahead of that big event tomorrow. Take a listen in. देखिए, जहाँ जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम, और जो राम को लाए हैं वह अयोध्या आए हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर स्वच्छ अयोध्या, सुंदर अयोध्या का एक संकल्प जो अयोध्या वासियों ने लिया है, अयोध्या के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लिया है, यहाँ के हमारे महापौर जी, हमारे विधायक जी गणों ने लिया है, हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता यहाँ अयोध्या के पूज्य साधु संत और जनता जनार्दन सब ने लिया है, उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हाँ, और इससे कड़ाके की ठंड, जब लाठियां चलती थी, जब गोलियां चलती थी, जब जेल भेजा जाता था, तब भी राम भक्त रुकता नहीं था। हम राम भक्त हैं, राम सेवक हैं, कार सेवक हैं, और हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान है, सबको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ये आप समझ आओ तो पूरी अतिरुचिर बनाई प्लास्टिक मुक्त अयोध्या को लेकर के हमारे यहाँ नगर निगम में महापौर जी विशेष जो अभियान चला रहे हैं यहाँ पे, उसी का यह भी एक क्रम है। Time for a short break, viewers. On the other side, the Indy remains divided over prime ministerial face hurdle. Siddaramaiah pitches for Rahul Gandhi now. There's a reason why over 200 new age companies scout for talent from our campuses.
It's because we've future-proofed our courses with a higher technological baseline, with a thrust on specialized industry skills and tech innovation skills. The Amrita School of Engineering. Tomorrow's engineering today. हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो रही है। प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग और भर्ती बोर्ड तेजी के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने से आज प्रदेश के युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना साकार हो रहा है। मेरा नाम राम प्रकाश शर्मा है। मुझे जेल विभाग में जॉब मिली है, जेल वार्डर के पद पे हूँ मैं। हम लोगों ने सबसे पहले लिखित परीक्षा दी है, उसके बाद में कट ऑफ मेरिट वगैरह क्लियर करने के बाद में फिर हमने शारीरिक दक्षता क्लियर करी, DVPST हुआ, उसके बाद में फिर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, फिर मेरिट हुई, उसके बाद हम यहाँ आए। रोजगार सृजन की दिशा में नित नए कदम बढ़ा रही योगी सरकार ने प्रदेश में सरकारी नौकरी की नियुक्ति में एक रिकॉर्ड कायम किया है। जब सेफ बैंकिंग के बिना हो हैकर्स के पास अथॉरिटी, फिर किस बात की साइबर सिक्योरिटी। क्विक हील, आज के लाइफ की प्रायोरिटी साइबर सिक्योरिटी। The latest update in Israel embassy blast case in Delhi. 2 suspects have been identified by the Delhi police. It is known that both the suspects had taken an auto rickshaw from Jamia to Prithviraj Road. Police is investigating the CCTV footage of the entire route. The BJP has once again lashed out at Congress for seeking crowdfunding, saying that after looting the country, Congress is now asking the country for donations. Rahul Gandhi should forget about Nyaya Yatra. He should start Indi Jodo Yatra, because the way in which the alliance partners are fighting. Latest example is the Sanjay Samvad from Maharashtra. Have you heard Sanjay Nirupam say that Uddhav Sena is टूटी हुई party? Who will give them 23 seats? So Sanjay Raut from Uddhav Sena says that Congress has to start from zero. These गांव गली के नेताओं से we do not talk. We talk to leaders in Delhi. Who are these leaders in Maharashtra? And this is the kind of confusion they have even in West Bengal, Trinamool Congress versus Adhir Ranjan Chaudhary. In Uttar Pradesh, Samajwadi Party versus Congress Party. In Punjab, Delhi, Aam Aadmi Party versus Congress Party. In Kerala, Left Party say that Rahul Gandhi should not contest from Wayanad.
And we see Congress party labeling Pinarayi Vijayan as dictator, coward, psychopath. अब पूरे alliance में no mission, no vision. Therefore, they have not been able to come up with logo, with neta, with niti. There's only confusion and contradiction in their alliance, and that is what is evident even now. Cracks continue to widen within opposition bloc. Karnataka Chief Minister and Congress leader Siddharamaiah has pitched Rahul Gandhi as the Prime Ministerial candidate on behalf of the Indie bloc. The Karnataka Chief Minister also went on to say that the Congress party has the strength to address problems of this country, so Rahul Gandhi should become the Prime Minister of the country. New Delhi station experienced delays and cancellations of several trains due to dense fog. The adverse weather conditions also led to the diversion of around 60 flights where low visibility posed challenges for air travel. Indian Navy has unveiled the new design of Admiral's epaulets, showcasing the nation's maritime legacy, announced by Prime Minister Narendra Modi during the Navy Day. The new design is drawn from the naval ensign and inspired from Rajmudra of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Ayodhya is gearing up to extend an extraordinary welcome to the Prime Minister, transforming the city into a divine spectacle. Streets in the temple town are adorned with flowers. Orange and yellow marigolds enhance the beauty of the redeveloped Rampath, where ornamental lampposts are wrapped up in decorative floral arrangements, adding to the grandeur of the preparations. Time for a short break. On the other side, mega rejig in JDU ahead of 2024 elections. Lallan Singh steps down. Nitish Kumar takes over as the chief. हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी, तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्ड का स्टाइलिश पंखा सिर्फ हवा ही नहीं देता, आपके आलीशान घर के कोने कोने में ठंडी हवा के झोंके पहुंचाता है। कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर को सुंदर बनाएं। 5 स्टार BLDC कूल फैन से बिजली भी बचाएं। समय आ गया है घर के पंखे बदलने का और कूल फैंस घर लाने का। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामिया। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को
जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। टाइल्स में इतना गैप लगवा देंगे कोई भी ग्राउट। गलत जवाब। टाइल ग्राउट मतलब SP100 जो जॉइंट को दे अल्टीमेट प्रोटेक्शन। MY के लेटिक्रीट SP100 जोड़ हो तो ऐसा। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। Narasimha Rao, when he was Prime Minister, kept referring to the disputed structure as a mosque. So was that also an attempt to instigate? See, it was always referred to as the disputed structure. It was never referred to as mosque. Till Narasimha Rao said there is a mosque. And then this whole clash of temple versus mosque was built. Muslims versus Hindu was built. Secularism versus nationalism was built. Mulayam Singh Yadav, in order to pander to the Muslim vote bank, started saying if more people were required to be killed, then the security forces could have done it. You see, Mulayam Singh Yadav became the face of Islamic politics in 1990. He very clearly said that I will not allow Karseva to go on. Still, the Karseviks performed the Karseva and many were killed. People say it is the BJP which did it. It is actually the collective conscience of the Karseviks who believed in drama. They did it. They had nothing against anybody. Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के
लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। Thank you for joining us here on Republic TV. I'm Niranjan. It's 5 p.m. and we are counting down to that historic peace deal to be signed by the centre. Our focus is in the national capital this evening. Here are the headlines. Massive breakthrough after 12 years. Centre and ULFA to ink a peace deal shortly in Delhi. Big rejig in JDU ahead of 2024 elections. Lallan Singh steps down. Nitish takes over as chief. The India alliance divided over prime ministerial face hurdle. Siddaramaiah, the Karnataka chief minister, pitching Rahul Gandhi to lead the alliance. As the I.N.D.I.A seat sharing discussion drags on, it's likely to be pushed to January. BJP is firing an Indi Jodo Yatra. They're calling it the Indi Jodo Yatra Alliance. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath is in Ayodhya taking stock of the preparedness. It's a big week starting tomorrow for the country, with the Prime Minister descending in Uttar Pradesh for the big projects. And all eyes will be on the Prime Minister Modi's mega Ayodhya visit. He's set to unveil mega projects ahead of the inauguration in January. And our focus here on Republic TV this evening is on the tripartite peace accord. It's a peace accord between the pro-talks faction of the United Liberation Front of Assam and the central and Assam governments will be signed today. In a short while from now, it will be ending decades-old insurgency in the state of Assam. Union Home Minister Amit Shah, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, more than a dozen top leaders of the pro-talks faction of ULFA will be present during the signing of the peace agreement. Himanta Biswa Sarma has arrived at the MHA. So it's a big day for India. Big day for India. In fact, for years we've been talking about insurgency. We've been talking about secessionism. We've been talking about terrorism. But when you talk of integration, Shravan is joining me live from the national capital. Shravan, integration, when you speak of integration, many people will try and downplay what's happening, but you can't downplay it given the significance. Shravan. Well, in fact, remember, the talks have been going on since 2011, and the reason why many would say that this is undoubtedly a big breakthrough by the Himanta Biswa Sarma government and also the centre, keeping in mind that they have been able to bring the pro-talk faction on the table, on the negotiating table. And as I understand from the details that we've been able to source from our, from people who have been associated with this entire negotiation, they say that the reason why this has essentially worked is the fact that over the last 3 to 4 months is when the deal was essentially cracked. The pro-talk faction essentially was largely focusing on the fact that what really happens to the
future of the indigenous community, because remember, the genesis of the ULFA basically starts from the fact that they were looking forward towards what they called Assam's sovereignty, and that is now a chapter which is done and dusted. But having said that, let's not forget the biggest concern has always been about the indigenous community in the state of Assam. The demand that they had also essentially made a 12-point charter, of which one was also declaring the scheduled tribe fact that that was not accepted, is what we are being told. The scheduled tribe was only because, remember, if all the roughly about 6 communities, if they were given or granted the status of a scheduled tribe, that would be over 50%, which would essentially mean that Assam becomes a tribal state. Now, what's important to point out here is that in the last 3 to 4 months, they were essentially focused on what happens to the political rights of live these, pictures coming in, Shawan, live pictures coming in, Shawan. Remember the delimitation. Shawan, sorry to interrupt you there, but I'm getting in live pictures right now. These are live pictures coming in from the national capital. They're going to sign the accord, and those are live pictures coming in of ULFA leaders meeting Himanta Biswa Sarma. That's on your screens right now, ladies and gentlemen. Himanta Biswa Sarma on your screens, along with Union Home Minister Amit Shah. Top peace negotiations have been underway for several years now. ULFA Centre, Assam government are now signing the accord in the national capital as we speak. The memorandum, it's the memorandum of settlement that is being signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah. It's happening as we speak. We were told it will start at 5 p.m. on the dot at 5 p.m. These are live pictures coming in. Shawan, I want you to take us through these pictures. Who are the leaders present here? I see that the Union Home Minister is there, Himanta Biswa Sarma, the Assam Chief Minister is there. They've tried this for several decades, Shawan. Several decades, and finally they're all on the table. Shawan. Well, in fact, while Niranjan, I do not have access to the images that are basically coming in from inside the Ministry of Home Affairs. We are broadcasting from outside, but those who were supposed to be present in the meeting, which includes the Chief Minister of Assam, then you also have the Intelligence Bureau head, that is Tapan Deka. Along with him, you would also have the government's Northeast advisor, Mr. A.K. Mishra, who would be present in that room. But along with, more importantly, you would have the Pro-Talk faction, which is Anup Chetia, and the foreign and the president, that is Aravind Rajkhawa, who would be also part of that deal that is essentially going to be signed between the centre, that is going to be represented by Union Home Minister Amit Shah. You have the Chief Minister of Assam and the 2 leaders, the Pro-Talk faction leaders, who would be signing the tripartite deal between the 3. Now, it's as far as the contour of this memorandum, that is still not very clear at this point in time. Perhaps in the next couple of minutes, it's expected that there would be a detailed press briefing that's going to take place. One coming in from the Pro-Talk faction, who would essentially be talking about what is it that they've been able to secure. Secondly, with regards to the government of Assam is concerned, they have largely looked at one, securing the rights. Second is with regards to the economic prosperity, because remember, all this while, and Niranjan, most who've been outside the northeastern states would largely look at this particular tripartite deal from the security prism. But this is way beyond the security prism, because right now, if you see in the last few years itself, there has been a dip as far as insurgent activities in the state of Assam is concerned. You already had the Pro-Talk faction, which were on the negotiating table, but there were certain sticking points, which we'll try and put that out, the details of what were the sticking point and how exactly did the government essentially manage to broker this entire deal with the Pro-Talk faction. Remember, there is the other faction, that's the ULFA Independent, which is led by Paresh Barua, who's believed to be at the borders of China and Myanmar. He had essentially refused to have any talks with the government, and there have been attempts that have been made by Paresh Barua's faction to try and derail these talks. In fact, there have been certain incidents that have taken place, but these are sporadic incidents that have taken place in the state of Assam. So one cannot really only look into that aspect. But if you really see the growth that the state has actually witnessed because of being able to control these activities, and with this tripartite deal, remember, it is not only a deal that the state of Assam is going to benefit. Other states, the other northeastern states who are also trying to broker a similar sort of deal with several of these banned outfits. For instance, in the state of Meghalaya too, you have several
militant organizations. Similarly, in the state of Mizoram and Manipur, remember, this happens to be perhaps the bigger concern that the other states would also have, and this is going to have a direct ramification. So you have the tripartite deal, which is going to take, as I understand, Niranjan, correct me if I'm wrong, from the visuals that are coming in, by now it should have, it would have been done. Yes. And it will have the long-term, it will certainly have the long-term ramifications. And as I've been saying, that not only from the security perspective, but from the fact that the state would essentially see relative peace, and more important, which is going to clearly look into economic prosperity, is exactly what the government has basically been talking about. It's a historic peace deal. It's a historic peace deal. It's the peace deal of the decade, ladies and gentlemen. ULFA insurgency in Assam. An issue that many governments at the center have tried to combat and have failed for many decades. And finally, after decades of hard work, this peace deal is being inked in the national capital. We're getting the live pictures right now. Let's go back to the pictures. That's the live shot. Live shot of Union Home Minister Amit Shah seated next to Himanta Biswa Sarma, the Assam Chief Minister. These are live visuals of the signing ceremony of the ULFA peace deal in the national capital. I'm staying with these pictures, ladies and gentlemen, as I try and get you details of who's present there and why it's significant. It's being inked as we speak. Himanta Biswa Sarma there, signing on the dotted line. The ULFA pro-talks faction submitted a 12-point charter of demands for the discussion, which was accepted. And as we speak, the Assam Chief Minister's office and the Assam Chief Minister now officially signing on the tripartite memorandum of settlement between ULFA, the pro-talks faction, and the central and state governments is being signed in New Delhi. I want to stay with Shravan. Shravan, for the people of Assam, what does this peace deal mean, Shravan? Well, this peace deal essentially means that a state which has witnessed almost 4 decades of insurgency, the conflict that has been going on, finally would be rested. The reason essentially being that for a very long time, remember, the fight was about Assam's sovereignty. It basically stems from the fact that large part of land was basically taken away by these illegal immigration that has actually taken place. And mostly coming in from Bangladesh. Remember, the biggest brunt that the state of Assam actually faced was post the 1971 war, that you had several refugees who actually crossed over and thereafter actually settled in and around Assam, which actually the balance perhaps in the state of Assam was completely disturbed post 1971. And if you really look at the rise of ULFA as a militant organization, several of the activities that were basically done by them led to, back in 1990 is when this organization was finally banned by the center. But most of their leadership thereafter started operating outside the state of Assam, and they did actually cross over to Myanmar, had their base also in Bangladesh. In fact, a very important character whom you would see right now on your screens is Anup Chetia. Remember, he himself was in Bangladesh for quite, for a longer period of time, and thereafter basically coming into Assam. The only big change that we have essentially seen, that faction was willing to have that conversation, a dialogue with the government. Over a period of time, they've also, subdued in terms of the demands that they have been making. That sovereignty chapter is completely closed. They are essentially saying that what really happens to the indigenous community, which basically means the indigenous tribes and, the Rajbangshis, and there are several other communities that they are essentially talking about. But remember, the hill districts and these other areas, they all eventually benefited from what they're saying, that the focus was only about development of Assam. So to answer your question, what one would see that the growth story of Assam, and not just Assam, Niranjan, this has a direct impact across several other states, and which would essentially mean that the state is set for an unprecedented growth in the years to come. हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार और असम सरकार की अधिकारीगण,
अल्फा का सारे डेलीगेशन इंक्लूडिंग चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सारे लोग, हमारे सिविल सोसाइटी से आए हुए प्रतिनिधि मंडल, आज असम के लिए और एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल में गृह मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन में हमारा असम का जो शांति का प्रक्रिया ये निरंतर चलते रहा। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारा पास था। आज सक्सेसफुल गृह मंत्री अमित शाह जी का देख देखाव में हमने बोडो एकॉर्ड किया, कार्बी एकॉर्ड किया, आदिवासी एकॉर्ड किया और करीबन 8,756 जो हमारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए युवा साथी थे, सारे लोग मेन में आ चुका है। तीनों एकॉर्ड का अच्छा इंप्लीमेंट हुआ और तीनों एकॉर्ड से हमारा जो ट्राइबल मिलिटेंसी था ये खत्म हो चुका असम में, आज सभी मेन स्ट्रीम में है। अल्फा एक बहुत बड़ा एजिटेशन था। धीरे धीरे अल्फा ने आर्म्स को पकड़ा। एक असम का जो 1988 से इतिहास हुआ, ये इतिहास एक हिसाब से ब्लैक सेट का इतिहास रहा। काफी लोग मारा गया पूरा इस दौरान टिल 98 टिल टुडे में। एक जो हिसाब आते हैं कि ये पूरा प्रकरण में 10,000 लोगों का मृत्यु हुआ। वो इसमें इनोसेंट सिविलियन थे, सिक्योरिटी पर्सनल थे और खुद अल्फा का मेंबर्स थे। सारे लोगों मिला के 10,000 जैसा लोगों का निधन हुआ। और ये सारे 10,000 लोग अगर हम सिक्योरिटी फोर्स का 200-300 शहीदों को मैं छोड़ देता हूँ तो ये 9,500 और जो लोग हैं ये असम का ही था। ये हमारे असमीज लोग ही था जिसका पूरा ये 20 साल का दौरान निधन हुआ। कोई खुद भी नहीं जानते हैं कि उनको क्यों मारा गया। बहुत लोगों को अपना ड्यूटी में चला गया, बम ब्लास्ट हुआ, वो मर चुका। उनका फैमिली को आज भी ये जवाब नहीं है कि मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा को क्यों मारा गया, कोई नहीं जानते हैं। और जो लोगों को मारने के लिए बोला गया है शायद वो लोग भी नहीं जानते थे मैं इसको क्यों मार रहा हूँ। ऐसा ही असम का इतिहास रहा। धीरे धीरे हिस्ट्री आगे बढ़ा। हमारा अल्फा का चेयरमैन का नेतृत्व में लोगों ने निर्णय लिया कि हम भारत सरकार का साथ बातचीत करके ये समस्या का हल करूंगा। भारत सरकार का गृह मंत्रालय ने एक बहुत ही डिसिसिव स्टेप लिया कि हम अल्फा का साथ निगोशिएट करूंगा और ये सारे जो इश्यूज है इनको एक क्लोजर तक लेके आऊंगा। आज इसी का ही फल है कि हमारा आज एकॉर्ड होने जा रहा है। ये एकॉर्ड का जरिए असम का जो लोगों है, लोगों का काफी सारा एस्पिरेशन फुलफिल होगा। एकॉर्ड है या एकॉर्ड नहीं है, इन जनरल 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आउटरीच रहा नॉर्थ ईस्ट और असम के लिए, इसका कारण असम में एक पूरा शांति का माहौल हुआ। और ये सारे जो एकॉर्ड हुआ, ये सारे एकॉर्ड का कारण ये शांति का माहौल को काफी बल मिला। गृह मंत्री अमित शाह जी का एक अपना इनिशिएटिव रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को देश का साथ पूरा आगे ले जाना है। इसीलिए असम, त्रिपुरा, हर जगह में सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आज शांति का पहल हुआ। काफी सारे इलाका से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का विड्रॉ हुआ। आज असम में खाली 15% इलाका में ही आपसा है, बाकी 85% इलाका से आपसा का विड्रॉ भी हो चुका है। ये एकॉर्ड का बाद मैं विश्वास करता हूं कि असम में पूरा स्थायी शांति आएगा। और ये एकॉर्ड के लिए मैं अल्फा को धन्यवाद देना चाहूंगा।
कि आप लोग ने ये स्वीकार किया, आप लोग ने ये निर्णय लिया कि भारत सरकार का और असम सरकार का साथ एकॉर्ड करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दिया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद इसको पर्सनली सुपरवाइज किया कि सारा एकॉर्ड हो जाए, असम में शांति आए। मैं असम वासियों का ओर से आज का ऐतिहासिक दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देता हूं और साथ में अल्फा का नेतागण को भी मैं धन्यवाद देता हूं आज का ये हिस्टोरिकल एकॉर्ड के लिए। ये एकॉर्ड में काफी सारे चीज है जो असम गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, काफी सारे चीज है जो भारत सरकार को इम्प्लीमेंट करना है। अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, बोडो एकॉर्ड, कार्बी एकॉर्ड, आदिवासी एकॉर्ड, सारे एकॉर्ड को 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए गृह मंत्रालय ने काम किया, हमेशा हमें मार्गदर्शन मिला और असम सरकार ने भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे कदम उठाया। मैं विश्वास का साथ बोल सकता हूं कि ये अल्फा का जो एकॉर्ड है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आशीर्वाद से भारत सरकार और असम सरकार दोनों 100% इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेगा और इम्प्लीमेंट भी होगा। मैं आज का यह ऐतिहासिक दिन में पुनः एक बार जो हमारे सिटीजन ने, हमारे असम वासियों ने ये पूरा समय में अपने आप को बलिदान दिया, मैं सारे परिवारजनों को पुनः एक बार विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग सब असम को एक बेहतर प्रदेश बनाऊंगा, भारत वर्ष का अंदर में असम को एक शक्तिशाली प्रदेश बनाऊंगा और आप लोगों का जो बलिदान रहा, ये बलिदान को हमने आगे रखते हुए असम को शांति, प्रगति और विकास का ओर लेके जाऊंगा। पुनः एक बार मैं आज का ये हिस्टोरिकल ओकेजन में असम वासियों को मैं पुनः नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट करते हूँ। आज के इस ऐतिहासिक समारोह में मेरे साथ उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान बल्ला जी, आर सूचना ब्यूरो के चीफ श्री डेका जी, उल्फा के सारे प्रतिनिधिगण, नॉर्थ ईस्ट और असम के अलग अलग जाति संगठनों के और स्टूडेंट फेडरेशंस के प्रतिनिधिगण और प्रेस के मित्र, आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज आसाम के भविष्य के लिए एक सुनहरा दिन है। लंबे समय से आसाम ने हिंसा को झेला है, पूरे नॉर्थ ईस्ट ने हिंसा को झेला है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम करने के प्रयास हुए। मन खोलकर, खुले हृदय से सभी के साथ बातचीत की शुरुआत हुई और उनके मार्गदर्शन में ही उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा। पिछले 5 वर्षों में 9 शांति और सीमा संबंधित समझौते अलग अलग राज्यों के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े हिस्से में शांति की स्थापना हुई है। रिकॉर्ड पर 9000 से ज्यादा काडर ने सरेंडर किया है और आसाम की मैं बात करूं तो 85% आसाम में से अब सपा को हटाया जा रहा है।
और आज भारत सरकार, आसाम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा, उसके बीच में जो ट्राई पार्टी समझौता हुआ है, इससे आसाम के सभी हथियारी ग्रुपों की बात को यहीं पर समाप्त करने में हमें सफलता मिल रही है। ये आसाम और नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस एमओयू के माध्यम से उल्फा के प्रतिनिधियों ने सभी हथियार और गोला बारूद को आत्मसमर्पण करने के लिए, सशस्त्र संगठन को भंग करने के लिए, कैडरों के कब्जे वाले सभी शिविर को अति शीघ्र खाली करने के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, देश की एकता और अखंडता में सहभागी होने के लिए सबने सहमति दी है। ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। सिर्फ उल्फा के संघर्ष की बात करें तो करीब करीब 10,000 लोग उल्फा के इतने लंबे समय के संघर्ष में मारे गए और 1979 से लेकर अब तक इधर और साइड से जो भी मारे गए होंगे वो सभी इस देश के ही नागरिक थे। आज ये समस्या का संपूर्ण समाधान हो रहा है, इसका मुझे आनंद है। उल्फा के प्रतिनिधियों से बात कर भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी अमाउंट का पैकेज और इसके साथ साथ ढेर सारे आसाम के विकास के प्रोजेक्ट को भी हमने स्वीकृति दी है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समझौते की एक एक बात का फुल स्टॉप कॉमा में टाइम बाउंड मैनर में अमल किया जाएगा और आपके विश्वास पर नरेंद्र मोदी सरकार खरी उतरेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, आसाम की ही बात करें तो मोदी जी की सरकार बनने के बाद घटनाओं में 87% की कमी हुई, मृत्यु में 90% की कमी हुई है और अपहरण में 84% की कमी हुई है और अकेले आसाम में अब तक 7500 कैडर ने सरेंडर किया है और इसमें आज 700 की संख्या बढ़ जाएगी। तो अकेले आसाम में 8,200 कैडर का सरेंडर होना ये आसाम के लिए शांति के नए युग का सूत्रपात है। समझौते जो हुए, समझौते से समाधान तक की पूरी यात्रा को मैं जरूर बताना चाहूंगा। 2019 में NLFT के साथ त्रिपुरा में समझौता हुआ, 2020 में ब्रू समझौता हुआ, 2020 में बोडो समझौता हुआ, 2021 में कार्बी समझौता हुआ, 2022 में आदिवासी समझौता हुआ, 2022 में आसाम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ और अभी 2023 में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का समझौता हुआ और आज उल्फा के साथ समझौता हो रहा है। मैं मानता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट और विशेष कर आसाम के लिए एक शांति के नए युग की शुरुआत होने जा रही है। मैं आज उल्फा के सभी प्रतिनिधियों को हृदय से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जो भरोसा भारत सरकार पर रखा है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से आपकी मांग किए बगैर ही इस सारी चीजों को पूरी करने के लिए एक टाइम बाउंड मैनर में प्रोग्राम भी बनाया जाएगा और हम गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक कमिटी भी बनाएंगे जो आसाम सरकार के साथ रहकर ये पूरे समझौते को पूरा करने का प्रयास करें, समयबद्ध तरीके से पूरा। हमने बोडो के साथ किया या ब्रू के साथ किया या त्रिपुरा में किया, सभी समझौतों को 19 के बाद जितने समझौते हुए हैं हम समय से आगे हैं, कहीं पर समय से पीछे नहीं है। समय से पहले ही हमने समझौते की शर्तों को पूरा करने का प्रयास किया है।
आज एक ऐतिहासिक घटना जो आकार ले रही है, उसके लिए सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इनके ब्रॉडर विजन उग्रवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के बगैर ये संभव नहीं था। असम के मुख्यमंत्री, असम के अधिकारी, हमारे गृह सचिव, DIB और उनके तहत काम करने वाली पूरी नेगोशिएशन करने वाली ऑफिसरों की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। और इस समझौते में सबसे बड़ा यश अगर किसी को जाता है तो उल्फा के प्रतिनिधियों को जाता है, जिन्होंने बहुत बड़े मन के साथ ये समझौता किया है और विश्वास रखकर शांति की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया है। मैं फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि समझौते की सारी बातें समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गृह मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी फोटो खिंचाने के लिए आ सकते हैं। All right, that was Union Home Minister Amit Shah, who was speaking after Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma. The historic deal has been signed in the national capital. You can see that moment when this peace accord was signed between the centre and, of course, the pro-talks ULFA faction. ULFA Centre Assam signing that tripartite peace accord. My colleague and senior editor Shravan Sen joins us on the broadcast for more. Shravan, as Amit Shah was just saying, that this is a new era of peace that is going to begin. Of course, this is a historic moment. Take us through all that has been said and pointed out right now by the Chief Minister of Assam and the Home Minister. Well, there's absolutely no doubt about the fact that this is a new dawn not only for the state of Assam but for the northeastern states. In fact, the Union Home Minister underscoring the point that this is something that the Modi government will ensure that every full stop, every comma of that particular memorandum will be followed, and that's an assurance that has really come in from the Union Home Minister. So what are we really looking at? Some details that we've been able to pick up in terms of what this tripartite deal between the Government of India, Government of Assam and the ULFA pro-talk faction essentially entails. One, we are looking at what the Union Home Minister says is a massive economic or a financial aid that is being provided to the government, which would essentially mean that you would have several development projects that would be undertaken. Now, how would that be distributed amongst the indigenous community is something that we'll have to wait and watch. But remember, for about 4 decades of insurgency that the state of Assam has actually witnessed, and then you had a militant organization like the ULFA, which of course back in the 90s, it was only back in 1990 that it was banned. But remember, these activities, the militant activities that were carried out in across the state of Assam, not only dented the prospects, not only brought down the economic prospects of the state, but also the very fact that peace was completely elusive in the state of Assam. Now, just take a look at some of the data points here. You would understand, you would get a sense back in the 90s, in just about 1 year, in 1991 itself, you've had over 200 killings that have taken place in the state of Assam. And that is the reason why it is important. Today, what the government has been able to achieve is the fact that something that was being worked on for a very, very long time. These talks basically started in the year 2011. You had the leadership of the ULFA, which was for a very long time not even in the state of Assam, but they were outside. There were sticking points on this entire matter, but over a period of time, and what we are being told, that last 3 to 4 months was extremely crucial, because they finally were able to give the assurance that political rights of these communities would be completely perhaps sealed. And the fear that the indigenous community was basically suffering at the hands of illegal immigration that has taken place, that would be taken care of. Let's just also quickly take you through some of the images that are coming in. I'll just see if we can also take you through the images from outside the Ministry of Home Affairs, where in a short while from now, expecting Assam Chief Minister may be stepping out.
there are preparations that are taking place of that to happen. In a short while from now, you would also have the ULFA pro-talk faction. They would be also addressing the media is what we are picking up at this point in time. That's roughly, it's expected post 6 o'clock is what we are being told. But coming back to some of the features, what we have been able to pick up is the fact that about 95 constituencies of the 124 constituencies where this is going to be, there is going to be a direct impact. The indigenous communities, their political rights would be completely safeguarded, and also land rights. These are some aspects, the finer details of it, perhaps in a short while from now would emerge. Official press release is also expected from the Ministry of Home Affairs. That's going to happen in a short while from now. But undoubtedly, as the Chief Minister of Assam puts it, that history has been made. Right. Thank you so much, Shaban, for joining us with those details. Of course, that is a historic peace deal that has been just signed. And we will, of course, keep coming back to you for more updates on that and more details on that. But right now, we're stepping into a big breaking that is coming in right now. These are the visuals coming in of the JDU National Executive meeting right now that is happening in the National Capital. Nitish Kumar now has formally taken over as the JDU president. This is coming in right now on your screens, viewers. The JDU is getting... Nitish Kumar is becoming the JDU president for a second time, and he has spoken to the media also. Let's take a listen in. So Nitish Kumar, they're speaking to the media saying that he has accepted the position of the JDU national presidency. Let's take a listen in to what Nitish Kumar had to say right after he formally takes over the post. साहब निश्चित तौर पर आइए आपको ब्रीफ करेंगे हो गया एक बार नहीं ये हो रही थी वो हम स्वीकार कर लिया है अब फिर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को स्वीकार कर चुके हैं। त्यागी सर फ्लावर क्या होता है थोड़ा ये हाथ नीचे साहब निश्चित तौर पर आइए आपको ब्रीफ करेंगे हो गया एक बार नहीं ये हो रही थी वो हम स्वीकार कर लिया है अब फिर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को स्वीकार कर चुके हैं। सर त्यागी सर फ्लावर क्या होता है That was Nitish Kumar speaking to the media after taking over as the JDU chief. My colleague Prakash is joining us from the national capital. Prakash, another twist, another turn in the Bihar politics, isn't it? And what did really transpire in that national executive meeting of the JDU? And what do we expect from here? Nitish Kumar taking over as the JDU chief for a second time now. Now Nitish Kumar has become the president of the JDU. Now, what lies ahead for Nitish Kumar is the question. The political future of the JDU as well as Nitish Kumar. Ever since Nitish Kumar was snubbed by the India Alliance parties, specifically the proposal of Mallikarjun Kharge's name by Mamata Banerjee and Arvind Kejriwal, that laid the foundation of differences and dissent between the India Alliance party, and specifically Nitish Kumar was angered to an extent that he called the meeting of the National Council of the JDU and sought the resignation of Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh, who was the outgoing president. But as a matter of fact, Rajiv Ranjan Singh was cozying up to the RJD as well, and there were news emanating that around 11 JDU MLAs were paraded before the RJD leader. Now, is there any scope of political realignment? Devesh Chandra Thakur, the senior JDU leader as well as the chairman of the Bihar Legislative Council, categorically said that whatever Giriraj Singh says, that the house is shut, the doors are shut, but the keys do not lie with Giriraj Singh. The keys lie somewhere else, that is with Amit Shah and Narendra Modi. So
now, with Nitish Kumar donning the mantle and a section of the JDU wants the political realignment with the BJP once again. Now, the back channel negotiation would be starting, what I feel, anytime soon, as well as Lalu Yadav would be jittery in Patna. Both Lalu and Tejasvi Yadav, they would be doing the mathematics of how to get to the magic number because they have their own speaker, Awadh Bihari Chaudhary. So, BJP is also keeping a close eye. So, hectic political drama and unfolding in Bihar politics now in the run-up to the 2024 elections. I am joined by Rahul Kumar, the spokesperson of the JDU. Rahul ji, do we see a political realignment now as far as JDU is concerned? Because Nitish Kumar apparently was unhappy with the way Lalan Singh was functioning, and that is why just ahead, 2 months away from the elections, he was removed. No, I think we have some confusion and misconception over here. The meeting which held today, executive and the council both were routinal meetings. And the way our previous president, Sri Lalan Singh ji, has resigned or posted his resignation before CM, he was his willingness to do so because of his hectic schedule in his constituencies, and he was not been able to do the justice with the post. So that was the reason, and this was clearly clarified in the meeting as well. So as far as the realignment goes, we are totally with India Alliance, and this has been passed in our resolution as well. Whatever this BJP government is doing, they are not being loyal to the citizen of the country, and they are not going to the people with the basic agenda of the people, which goes to... So, Rahul ji, I agree, but I have covered politics enough to understand all these political connotations. It is just a posturing, because I feel that just 2 months away from the Lok Sabha elections, a JDU president doesn't resign or is removed, whatever we say, for nothing. And there has to be a reason. And there are 2 sections within the JDU, one led by Lalan Singh and one belonging to certain sections, which includes certain senior ministers as well, who wants a political realignment with the BJP, keeping in mind the fragile health of Nitish Kumar and also the very question of the political existence and the survival of the JDU as a party. And if this continue, then it cannot go on for long. So now the political longevity of the JDU as a party is in question, and either way, it has to face problem, because Nitish Kumar has had his own fair share of innings for a long time. So we'll wait and watch what kind of political drama unfolds after this decision, and we'll have to keep a close watch on Lalu Yadav and Tejasvi Yadav, because he is a politician with a sharp brain, and he would be doing his mathematics in Bihar. Back to you. Absolutely, of course. The suspense and what lies ahead for this alliance in Bihar continues. But for the moment, thank you so much, Prakash, for joining us with those details on that story. Time for a short break. On the other side, India divided over prime ministerial face hurdle. Siddaramaiah pitches for Rahul Gandhi now. And sources suggest seat-sharing discussion likely in January. BJP fires the Indi Jodo Yatra tag. Details on the other side. Stay tuned. हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की,
तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो रही है। प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग और भर्ती बोर्ड तेजी के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने से आज प्रदेश के युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना साकार हो रहा है। मेरा नाम राम प्रकाश शर्मा है। मुझे जेल विभाग में जॉब मिली है, जेल वार्डर के पद पे हूँ मैं। हम लोगों ने सबसे पहले लिखित परीक्षा दी है, उसके बाद में कट ऑफ मेरिट वगैरह क्लियर करने के बाद में फिर हमने शारीरिक दक्षता क्लियर करी, DVPST हुआ, उसके बाद में फिर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, फिर मेरिट हुई, इसके बाद हम यहाँ आए। रोजगार सृजन की दिशा में नित नए कदम बढ़ा रही योगी सरकार ने प्रदेश में सरकारी नौकरी की नियुक्ति में एक रिकॉर्ड कायम किया है। आपने सोमानी का नया रोल देखा? वही स्टाइल और रेंज सोमानी बाथवेयर में भी। सोमानी बाथवेयर। टाइल्स में इतना गैप लगवा देंगे कोई भी ग्राउट? गलत जवाब। टाइल ग्राउट मतलब SP100 जो जॉइंट को दे अल्टीमेट प्रोटेक्शन। MY के लेटीक्रीट SP100 जोड़ हो तो ऐसा। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। Right, now Ayodhya is all decked up to host Prime Minister Modi tomorrow, and among the projects to be unveiled by the Prime Minister include a redeveloped Ayodhya railway station, renamed as Ayodhya Dham railway station, and of course an airport in Ayodhya. Listening to UP Deputy Chief Minister on the palpable excitement ahead of Prime Minister Modi's visit to the holy city tomorrow. देखिए, जहां जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम, और जो राम को लाए हैं वह अयोध्या आए हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर स्वच्छ अयोध्या, सुंदर अयोध्या का एक संकल्प जो अयोध्या वासियों ने लिया है, अयोध्या के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लिया है, यहाँ के हमारे महापौर जी, हमारे विधायक जी गणों ने लिया है, हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता यहाँ अयोध्या के पूज्य साधु संत और जनता जनार्दन सब ने लिया है, उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इससे कड़ाके की ठंड, जब लाठियां चलती थी, जब गोलियां चलती थी, जब जेल भेजा जाता था, तब भी राम भक्त रुकता नहीं था। हम राम भक्त हैं, राम सेवक हैं, कार सेवक हैं, और हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान है, सबको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता। ये आप समझ आओ तो पूरी अतिरुचिर बनाई प्लास्टिक मुक्त अयोध्या को लेकर के, यह हमारे यहाँ नगर निगम में महापौर जी विशेष जो अभियान चला रहे हैं यहाँ पे, उसी का यह भी एक क्रम है। Time for a short break. On the other side, UP Chief Minister Yogi Adityanath is in Ayodhya taking stock of preparedness for tomorrow's inauguration of the airport and the big event lined up
as Prime Minister Modi arrived in Ayodhya to inaugurate. And all eyes on Prime Minister's mega Ayodhya visit, set to unveil mega projects too ahead of that inauguration. There's a reason why over 200 new age companies scout for talent from our campuses. It's because we've future-proofed our courses with a higher technological baseline, with a thrust on specialized industry skills and tech innovation skills. The Amrita School of Engineering. Tomorrow's engineering today. हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। For 2 illustrious decades, Gujarat's unwavering commitment to hospitality, encapsulated in the timeless adage, Atithi Devo Bhava, has been showcased to the world by vibrant Gujarat, emerging as the preferred destination for not just tourists, but also for MICE events. Gujarat has truly embodied the vision of Meet in India and has propelled it through vibrant Gujarat with iconic landmarks and immersive tourist destinations, combined with tourist-friendly policies and innovative digital platforms catering to diverse needs. Gujarat's growing tourism industry is propelling India towards achieving the vision of Viksit Bharat at 2047. Indulge in the perfect synergy of business and tourism in Gujarat at Vibrant Gujarat Global Summit 2024. Gateway to the future. आपने सोमानी का नया रोल देखा? वही स्टाइल और रेंज सोमानी बाथवेयर में भी। सोमानी बाथवेयर। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
Captain Vijay Kant is going to be put to rest, laid to rest in the DMDK party office right now. We are looking at the final rites being performed by the closest of family and also the representatives of all the important parties, including the ruling government, opposition party, all are here, and the celebrities and friends from the film fraternity are also here, and the final rites are now happening. The state police are here to give him the state honors with by firing 72 bullets. Therefore, this is a state-honored funeral that is being given to Captain Vijay Kant. Now, as the people of Tamil Nadu are also mourning, we are going to bring you all the live details and updates about this, as well as all other stories on the other side. Stay tuned with us. हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। जहां यादगार होता है हर एक किस्सा। इको रिट्रीट ओडिशा। आपने सोमानी का नया रोल देखा? वही स्टाइल और रेंज सोमानी बाथवेयर में भी। सोमानी बाथवेयर। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। जामनगर की भट्ट फैमिली को तारे देखना पसंद है, जम्मू की भट्ट फैमिली को सितारे देखना पसंद है। फैमिलीज जितनी भी सेम लगे, होती अलग है। इसलिए नया वीमैक्स पोस्टपेड, जो दे हर फैमिली को उनकी पसंद की चॉइसेस, जैसे ईज माई ट्रिप, Amazon Prime एंड मोर। वीमैक्स पोस्टपेड, चूज व्हाट यू वांट टू यूज। Narasimha Rao, when he was Prime Minister, kept referring to the disputed structure as a mosque. So was that also an attempt to instigate? See, it was always referred to as the disputed structure. It was never referred to as mosque. Till Narasimha Rao said there is a mosque. And then this whole clash of temple versus mosque was built. Muslims versus Hindu was built. Secularism versus nationalism was built.
Mulayam Singh Yadav, in order to pander to the Muslim vote bank, started saying if more people were required to be killed, then the security forces could have done it. You see, Mulayam Singh Yadav became the face of Islamic politics in 1990. He very clearly said that I will not allow Karseva to go on. Still, the Karsevaks performed the Karseva and many were killed. People say it is the BJP which did it. It is actually the collective conscience of the Karsevaks who believed in drama. They did it. They had nothing against anybody. As soon as Vallabhbhai Patel passed away, Nehru could not tolerate his cabinet colleague K.M. Munshi taking part in the Somnath temple reconstruction. So I think Nehru, in the name of secularism, wanted India to detach itself from its Hindu roots. Jawaharlal Nehru's tolerance of Hinduism vanished after Sardar Patel. He politically tolerated Hinduism and he was, according to me, a fake secularist who did not want Hinduism in India. Everything related to the Hindus, he only scorned. Narasimha Rao, when he was Prime Minister, kept referring to the disputed structure as a mosque. So was that also an attempt to instigate? See, it was always referred to as the disputed structure. It was never referred to as mosque. Till Narasimha Rao said there is a mosque. And then this whole clash of temple versus mosque was built. Muslims versus Hindu was built. Secularism versus nationalism was built. This is exclusive. Tonight, ladies and gentlemen, history has been made. The tripartite deal between Government of Assam, Government of India and the Pro-Turk faction of the ULFA, bringing an end to decades of insurgency in the state. But is it only about security or it is way more than this? How exactly did the government really come to this kind of a conclusion? And more importantly, what does this essentially mean not only for the state of Assam but for the other northeastern states? But up first, let's take a look at the headlines that you're tracking at this hour. Massive breakthrough after 12 years. Centre and ULFA ink the most historic peace deal. Mega rejig in JDU ahead of the 2024 elections. Lalit Singh steps down. Nitish takes over as chief. India divided over prime ministerial face. Hurdle Siddaramaiah pitches for Rahul now. Yogi Adityanath in Ayodhya takes stock of preparedness ahead of the mega Mandir inauguration. Politics continues to rage on in Ayodhya. India now objects to Ayodhya airport renaming. All eyes on Prime Minister's mega Ayodhya visit set to inaugurate mega projects. Well, the tripartite deal has been signed. This evening, around 5 o'clock, is when the Chief Minister of Assam reached here at the Ministry of Home Affairs, and the deal was signed between the Government of India, represented by Union Home Minister Amit Shah, and Government of Assam, that is
being represented by Chief Minister of Assam and the Pro-Talk faction. In fact, I'm given to understand Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sharma, is now addressing the media. Let's try and play that out. And also we'll try and go across to our reporters getting you the latest details. We'll try and put together what this deal really entails. What does it really mean for the indigenous community of Assam? And how exactly did the government of Assam manage to really convince those who for the very long time have actually rejected any sort of talks with the government of India? How did the Pro-Talk faction really come to a conclusion? Let's first listen in to the Chief Minister. Well, let's also quickly go across to my colleague Anirudh, who's been tracking this story very closely. Anirudh, for the people of Assam, this is undoubtedly a new dawn. But those who have actually witnessed the insurgency in the state of Assam over the last 4 decades will finally heave a sigh of relief. And not just that, also be reassured that Assam is all set for unprecedented growth. Take us through the details that you're picking up with regards to this particular deal. Yes, Awan, definitely. This accord, which has been signed a short while back in New Delhi, brings a new hope and aspirations for the people of Assam, particularly for the youth. We all know that how Assam had went through in the last 4 decades, and a lot of transformation have been witnessed in the last 1 decade, particularly in the state of Assam as well as for the entire northeast, because Assam happens to be the gateway for the region. But yes, as far as the ambitions, the aspirations of the people here in Assam is concerned, everyone is hopeful that this accord, this peace pact which has been signed today, will bring a new era of change in the state of Assam. And even as we speak, had it been hardly 10 years back, if this accord had been signed 10 years back, there would have been multiple security beef up in and around every nook and corner of Assam. But today, as we witness this historic movement, there is no additional security measure which has been taken, fearing that someone might strike or if the situation will go out of control. But yes, there is absolute peace across Assam today. And yes, and this accord, it is believed that this accord will live up to the expectations of the people, and particularly all the people who are directly or indirectly involved with the ULFA's movement, because there have been lot of people who at some point in time was touched either by the atrocities meted out to them by the security forces or by the ULFA. Everyone today takes a sigh of relief that a 4-decade-long violence have finally come to an end, and everyone is now looking forward. In fact, for as far as the roadmap ahead is concerned, everyone is hopeful that the political ambitions of the people, of the indigenous people, the rights of the indigenous people will be safeguarded through this memorandum of settlement that has been signed in New Delhi. Sawan. Well, thank you very much, Anirudh, for getting us the latest details. In fact, over the next couple of minutes, we'll take you through the voices coming in from the state of Assam. In fact, my colleague Anirudh also spoke to ULFA chairman's wife, Kaveri Kachari. In fact, she was the one who was staying with the ULFA chairman in the jungles. Today, she says that she welcomes this deal and hopes that the much awaited stability in the state of Assam returns. To be a historic day for the state of Assam. After a 4-decade-long struggle, a 4-decade-long movement,
with arms. Finally, the United Liberation Front of Assam is going to sign a peace accord or a memorandum of settlement with the government of India today in Delhi. At 5 p.m., this historic pact will be signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah. The 4-decade history of Assam, for the last 4 decades history, has been very terrific. It has been one of the bloodiest history, not only in Assam or Northeast, but for the entire country. But as the ULFA is going to sign the peace pact with the government today, what are the aspirations of the family members of those who were directly involved in this struggle? I am joined by wife of chairman of ULFA, Aravinda Raskwa Kabedi Kasari, on this broadcast, and also she had been a very integral part of the organization in the last 4 decades, but now she is busy in various farmers producers companies which she has started. And বাইদেউ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম 4 দশকৰ এক ইতিহাস, ৰক্তক্ষয়ী ইতিহাস বুলি ক'ব লাগিব। ইয়াৰ অন্তত আজি এই এটা ঐতিহাসিক দিন হ'বলৈ গৈ আছে, কি আশা কৰিছে এই চুক্তিখনৰ পৰা? নমস্কাৰ, আমি এটা ইতিবাচক দিশ ওলাই পৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ, কাৰণ ইতিমধ্যে আপুনি কৈছেই যে সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি আমি আশা কৰি আছোঁ আৰু আমি বিভিন্ন সংঘাতৰ মাজেৰে আজি আমি আহি এইখিনি এটা পৰ্যায় পাইছোঁহি। গতিকে আমি আশা কৰিম এই শেষ মুহূৰ্তত যাতে আমি যিখিনি আমাৰ এজেণ্ডাৰ ভিতৰত আছে সেইখিনি যাতে কাৰ্যকৰী হয় আৰু অসমৰ কাৰণে যাতে এটা ইতিবাচক দিশ মানে কঢ়িয়াই আনে, আৰু অসমৰ যাতে আমাৰ সমাজৰ পৰা আমাৰ অসমৰ ল'ৰাবোৰ যাতে আৰু হেৰাই যাবলগীয়া নহয়, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ কৰ্ম পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হওক। আৰু যিটো আমাৰ অসমীয়া জাতিটো যি অস্তিত্বৰ সংকটত আমি আছোঁ, সেই অস্তিত্বৰ সংকটত যাতে নপৰোঁ আমি, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমি আশা কৰি আছোঁ। গতিকে এই চুক্তিখনতো সেইবিলাক দিশ প্ৰতিফলিত হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। 4 দশক জোৰাৰ অস্ত্ৰ লৈ কৰাৰ আন্দোলন আৰু এতিয়া বৰ্তমান আপুনি ষ্টাৰ্টআপ যোগে 2013 চনত আৰম্ভ কৰি পেলাই এতিয়া যিখিনি এটা কৰ্ম বিপ্লৱৰ যি আন্দোলন আপোনালোকে গঢ়ি উঠিছে, আপুনি বিশেষকৈ অসমৰ ভৱিষ্যতটো আপুনি কোন দিশে গৈ আছে বুলি ভাবে আৰু ভৱিষ্যতটোক লৈ আপুনি কিমান আশাবাদী? আজিৰ আমি উপলব্ধি কৰোঁ যে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি মানে সঠিক নোহোৱালৈকে কোনো এখন দেশৰে উন্নতি সম্ভৱ নহয়। গতিকে এইখিনি এই যোৱা কেইবাটাও দশক বছৰ জুৰি মানে সেই অনুভৱটো বেছি হৈছে। আৰু অসম তাৰমানে আমাৰ মানে অসম এখন মানে প্ৰকৃতিয়ে আমাক ইমান কিছুমান উপহাৰ দি থৈ গৈছে, যিবোৰৰ আমি মানে সৎব্যৱহাৰ কৰিলে আমি অসমক এখন বহুত মানে উন্নত দেশৰ মানে ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আমাৰ সেইবিলাকৰ সঠিক ব্যৱহাৰ হোৱা নাই, বা আমি সেইবোৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই, বা আমাৰ অন্তৰালে তাৰমানে সেইবোৰ ৰৈ গৈছে। গতিকে সেইবিলাককে আমি আৰু যদি পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব পাৰোঁ, আৰু অসমৰ যিখিনি মানে আমাৰ মহিলা আছে বা অধিকসংখ্যক আমাৰ স্কুলৰ পৰা ওলাই যোৱা Well, Prime Minister Modi's Act East policy also gets a big boost from the tripartite deal. Essentially, the state of Assam is going to witness unprecedented growth. But what has really worked in the last few years when these talks were actually taking place, and how the state has essentially benefited on major indices? Take a look at this report. Putting an end to 4-decade-long insurgency, a tripartite accord between the centre, Assam government and ULFA was inked today. Sources suggest economic assistance and protection of political rights of indigenous communities is what sealed the deal.
other faction, that's the ULFA Independent, which is led by Paresh Barua, who's believed to be at the borders of China and Myanmar. He had essentially refused to have any talks with the government, and there have been attempts that have been made by Paresh Barua's faction to try and derail these talks. In fact, there have been certain incidents that have taken place, but these are sporadic incidents that have taken place in the state of Assam. So one cannot really only look into that aspect. But if you really see the growth that the state has actually witnessed because of being able to control these activities, and with this tripartite deal, other states, the other northeastern states who are also trying to broker a similar sort of deal with several of these banned outfits, this happens to be perhaps the bigger concern that the other states would also have, and this is going to have a direct ramifications. It's the most historic peace deal of the decade. But it isn't the only milestone achieved by the Hemanta government in Assam. From a mega crackdown on insurgency to an ever-declining crime rate, the Hemanta government is leaving no stone unturned to bring lasting peace in the northeastern state. This is Bureau Report, Republic TV. Well, in fact, we also spoke to Assam DGP GP Singh, an officer who spent a considerable amount of time in the state of Assam. He basically recounts the days that he was in the state of Assam and it was riddled with insurgency. But he says that this tripartite deal is not about security. It is way more than that. As he puts it, that the state is all set for not only unprecedented growth, but the golden phase. Listen in to what the DGP had to say. The tripartite deal between the government of India, Assam government and for that matter the Pro-Talk faction of ULFA, what does this essentially mean for the state of Assam and perhaps the implication that it has across the northeastern states? Joining me on this special broadcast is the DGP of Assam, Mr. GP Singh, and also he has the distinction of serving the state for a very long period. So someone who understands that a state which has suffered because of the insurgency for decades put together today sees a new dawn. Thank you very much, Mr. GP Singh, for joining us on Republic TV. Let me straight away begin by asking you the direct implication of the tripartite deal, not only for the state of Assam, but perhaps what it would mean for the entire northeastern states. What you have to understand at the beginning is that Assam basically has had three spheres in which there have been militancy / insurgency. One was the Bodoland territorial region, second was the hill districts Karbi Anglong and Dima Hasao, and third was the ULFA insurgency. Of these, Bodoland territorial region and hill insurgency is completely over, and ULFA, a larger faction of ULFA, has been in talks for the last few years. Now, what has happened is that this has resulted in a general environment of peace. During the last few years, because of the prevalence of peace in the state, there are parameters which are indicative that prosperity has come in. Like the state GSDP, which was about 3,46,000 crore rupees in 1920, is projected to be almost 6,24,000 crore rupees in 24-25. Similarly, the tourist inflow into Assam was 1 crore plus in 22-23. And the losses incurred by Oil India Limited or other oil companies have come down tremendously. Oil India Limited has reported that during the last 2 years they have reduced the losses in production by about 800 crore rupees. So these are indicators of the peace dividend which is there in Assam. And generally once peace comes to Assam, then it has larger ramifications in the entire northeast. So the entire northeast prospers, and also the government of India's policy of Act East, that gets a boost once the entire northeast becomes peaceful. So this is a very, very important step, and I hope that those who are still out, it's a small number that is now in camps in Myanmar and bordering China, I hope they also come over ground and join the development process. It is now no longer about security or insurgency or terrorism. It's about development of Assam, the peace dividend for people of Assam, and how the quality of life of people of Assam improves. Mr. Singh, I want to ask you this question because it is a little bit personal for many of us who come from the northeastern states, because we have grown up in the years of insurgency.
You already make a point that this is not only about security, but I would still want to talk a little bit about it, because the implications that it also has in security and for your force itself, because there was a point in time not a single day would essentially pass in any of the northeastern states with some sort of a militant activity that would go on. What is the direct ramification of a tripartite deal with the ULFA, and the very fact that the Assam police perhaps would be changing with the way they operate in the years to come? One of the most important aspects of this is that since they have been in talks with the government, and today is the culmination of those talks where we go in for signing of the accord, is that 2023, after almost 30 years, or I would say after 1990, that is 33 years, is the first year where there has been no loss of civil life in any terrorist activity. Similarly, no security personnel has lost life in this year. So that answers your question, what is the import of this on Assam Police or any of the sister agency working in Assam. Another aspect of this entire thing is that with peace coming in, Assam Police has been able to concentrate more on its parallel core task of investigation, prosecution of crime, and action against drugs. Now 2023 has seen, under the direct supervision of the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himant Biswa Sharma ji, continued action against drugs. So this year we have recovered unprecedented amount of drugs, almost totaling to market value of 1600 crore rupees. This year we have recovered 150 kg plus of heroin, plus whole lot of other drugs. Other aspect which is very significant is that again we have brought down things like rhino poaching almost to zero. 2022 was the first year after almost 50 years that there was no rhino poaching in the entire state. So Assam Police is able to concentrate on the core policing task. Then during the peak of insurgency and connected law and order, we had suffered in terms of investigation of crime, detection of crime, conviction. Conviction rate had plummeted to 5.4% in 2018. Now this year in November it has come up again to 16.4%, which is a uptick of almost 300%. So these are the positive indicators, and these are indicators which have direct bearing on the life of people of Assam. So I feel that this accord and similar accords in hill districts and Bodoland territorial region that have been signed during the last couple of years have tremendous impact, and once these things become the norm, peace becomes the norm, Assam is set to boom. Mr. Singh, let me also then ask you about the stumbling block, because it hasn't been an easy journey. We're talking about something that started back in the year 2010 and 2011. Thereafter, we've seen multiple challenges and perhaps the talks really not fructifying, but things have changed. Also, walk us through the journey of getting to where we are today. See, journey is very simple. Whosoever has left the mainstream has to be motivated, guided, goaded into joining the mainstream. People who are in power have to understand what are the aspirations of those people, and today it is because the aspirations have been understood by the government of India and government of Assam that these people have come over ground and decided to sign this accord. Now there are some people who still have some issues, though as I said that there are very few. I am sure that they would also understand that there is a government in Assam and the government in Delhi which is willing to sit down, talk, understand their problems, find a solution, and then they will also join the mainstream. So it has been a long journey, but what has happened during the last few years that we have had these talks, and I have seen this in all the talk processes of all the militant groups, it takes time for the other side to understand this side's issues and vice versa. So the government and the people who had at one time left the mainstream, they have to sit together, they have to discuss, they have to talk. Their problems, their issues, their aspirations are to be heard by the government side and vice versa. And I think it is today when this agreement is being signed, it is an indicator that things are going in the right direction.
And having had experience of almost 3.5 decades in Assam, I think Assam is set for unprecedented economic growth in the coming decade or so. And I am hopeful that people of the country and people of Assam will reap the benefits of this. One final question that I want to take with you, Mr. Singh, is that there is still one faction that we are talking about. In the last couple of months, we've seen there was an attempt that was made to even derail the talks. Minor incidents have actually taken place. What happens to the Paresh Barua faction? Have they been rendered completely irrelevant after today's tripartite deal? I would say that government of Assam, led by the Honorable Chief Minister, is not willing to leave anybody behind. And he is very, very keen that the people who are still outside, we sit down, discuss with them and bring them also to mainstream. As far as isolated incidents of violence are concerned, Assam Police and other agencies who are working with us, they are fully competent and capable of handling them. But we do not want to leave anyone behind. We still want that they should also come over ground. They should also sit down, talk to us, because most of these people have left Assam long time back. What Assam is today is much different from what it was 30-35 years back. So they have to come, they have to stay here in Assam, understand what is the aspiration of the people, understand how Assam has changed, what is the future of Assam, bright, economically sound, very progressive state. So all that put together, we don't want to leave anyone behind. However, wherever there are violent activities, we would come down on such violent activities with a very, very firm hand. Thank you very much. It's always a pleasure having you on Republic TV. That was Assam DGP. GP is saying, laying out what is essentially the tripartite deal means not only for the state of Assam, but for the entire northeastern region. And well, many would say it's a new dawn for the northeastern states. QS&THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. होता है हर एक किस्सा। इको रिट्रीट ओडिशा। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को
अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। Malabar presents Mind Diamond Festival. दिल की वो बातें जो हम बोल नहीं पाते, डायमंड बोलता है। दिल के सारे राज खोलता है जब ये डायमंड बोलता है। दिल की ऐसी बातों को डायमंड से बुलवाओ। मलाबार आओ और आप पाइए डायमंड वैल्यू पे अप टू 25% ऑफ ड्यूरिंग माइंड डायमंड फेस्टिवल। आपने सोमानी का नया रोल देखा? वही स्टाइल और रेंज सोमानी बाथवेयर में भी। सोमानी बाथवेयर। इस पल को मुमकिन करने के लिए अबीर ने पहले से ही शुरुआत कर दी थी। ये पल सच हुआ, ये पल पलकों पे सूरज सा उगा, ये पल मानो रुक सा। और म्यूचुअल फंड से शुरुआत करना समझदारी की निशानी है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। Massive breakthrough after 12 years. Centre and ULFA inked the most historic peace deal. Mega rejig in JDU ahead of 2024 elections. Lallan Singh steps down. Nitish takes over as chief. Indi divided over prime ministerial pace hurdles. Siddaramaiah pitches for Rahul Gandhi now. Yogi Adityanath in Ayodhya takes stock of preparedness ahead of the mega Mandir inauguration. Politics continues to rage on in Ayodhya. Indi now objects to Ayodhya airport renaming. All eyes on Prime Minister's mega Ayodhya visit, set to inaugurate mega projects. We're getting across live to Chennai, where the final journey of DMDK founder and South superstar Vijay Kant is underway. His final journey, his funeral took place today, and now we're getting you the latest from Chennai, where Vijay Kant's funeral has just taken place. Actors, politicians are paying their last respects to Vijay Kant, popularly known as Captain. And that is the final journey of Vijay Kant. You can see on your screen right now, heavy security deployment also there. He is the DMDK founder, the actor turned politician, in fact a superstar turned politician there. Vijay Kant's last journey, an emotional homage to Captain Vijay Kant by his fans and followers. Of course, he has been, his party has been a player in Tamil Nadu politics as well. The Chief Minister of Tamil Nadu has also paid his last respects to Vijay Kant. State honour for late actor Vijay Kant in Chennai. My colleague Varshini is joining us live on the broadcast for more. Varshini, of course, it's an emotional farewell
by fans, followers alike. All right, I'm told that we'll reconnect with Varshini, right? I've just lost the connection there, but it was yesterday that that Vijay Kant succumbed to his illness. He had contracted COVID-19 infection. He was admitted in hospital for pneumonia, and after that he succumbed to his illness at the age of 71. And right from the Prime Minister to various eminent personalities have expressed their condolences. Vijay Kant's wife has taken over as the General Secretary of the DMDK after his demise, and he was admitted to the hospital, remember, in November for respiratory issues. He was discharged a few weeks later. Once again, he was admitted when he succumbed to his illness. You can see that the procession right now, hundreds of people have turned up to pay last respects. My colleague Varshini is back with us, I'm told, on the broadcast. Varshini, Chief Minister Stalin has also arrived. State honours for Vijay Kant. We try and again reconnect. There seems to be a problem with the network over there, but that you can see right now, that is the last rites are going to take place of actor Vijay Kant. Chief Minister M.K. Stalin has arrived to pay his last respects, tributes pouring in for Vijay Kant, a superstar, Tamil superstar, and of course a politician, DMDK founder. And we saw in the day several political leaders, top political leaders from the AIA-DMK and DMK also arriving and for the funeral of Vijay Kant. And from actors to politicians, Tamil Nadu Governor R.N. Ravi, Union Minister Nirmala Sitharaman, actor Rajnikant, Kamal Hassan, Prabhu Patiban, Khushbu, several others paid their last respects to actor and DMDK founder Vijay Kant in Chennai's Island grounds today. And BJP State President Annamalai also paid their last respect to Vijay Kant. And remember, yesterday Prime Minister Modi also tweeted in tribute to him and expressing his condolences to the family and friends for the loss. And his mortal remains were taken in a procession to DMDK headquarters as well in the afternoon in Coimbatore for the last rites. And on your screens, we just saw Chief Minister M.K. Stalin there in those visuals, where as he's arrived to pay the last respects. State honor for actor Vijay Kant, actor turned politician. He's been a Tamil actor, a versatile actor, popularly known as Captain. He has portrayed various roles where he has played a military officer in several of the films, several of his hits. And now we see that procession there as hundreds and thousands of people have turned up to pay the last respects. In other news now, latest update in Israel Embassy blast case in Delhi. Well, 2 suspects have been identified by Delhi police. It's learned that both the suspects had taken an auto rickshaw from Jamia to Prithviraj Road, where the embassy is situated. Police is investigating the CCTV footage of the entire route now. BJP has once again lashed out at the Congress for seeking crowdfunding. BJP has said that after looting the country, Congress is now asking the country for donations. Cracks continue to widen within opposition bloc. Karnataka Chief Minister and Congress leader Siddaramaiah has now pitched Rahul Gandhi's name as the prime ministerial candidate on behalf of the India bloc. The Karnataka Chief Minister further went on to say that Congress party has the strength to address the problems of this country, so Rahul Gandhi should become the prime minister. Time for a short break. On the other side, India remains divided over prime ministerial phase. Hurdles Siddaramaiah has pitched for Rahul Gandhi. And Chief Minister Yogi Adityanath is in the temple town of Ayodhya to take stock of the preparedness ahead of the mega Mandir inauguration and Prime Minister's event tomorrow.
There's a reason why over 200 new age companies scout for talent from our campuses. It's because we've future-proofed our courses with a higher technological baseline, with a thrust on specialized industry skills and tech innovation skills. The Amrita School of Engineering. Tomorrow's engineering today. मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। भाई इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स, जमीन से जुड़े। गाड़ी लेने से पहले टाटा एस गोल्ड पेट्रोल CX का दिल, यानी इसका इंजन देखा। ये इतना बढ़िया है कि 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज तो हंसते हंसते दे जाएगा। अब तेल के दाम तो बराबर ही है, पर इस गाड़ी की कीमत है कम, इसलिए अब हर ट्रिप में खर्चा है कम और मुनाफा ज्यादा। तो अब सोचो समझो और टाटा एस गोल्ड पेट्रोल CX में। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इन खर्चों के लिए अब उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। यशस्वी प्रधानमंत्री के विजन से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाई है उत्तर प्रदेश के करोड़ों अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2 करोड़ 63 लाख किसानों को मिला है स्वाभिमान से जीने का अधिकार। किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं 64,694 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत सभी किसानों को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जाती है 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता। अब किसान भाइयों को कृषि कार्यों के लिए किस्मत के भरोसे नहीं रहना होगा। अन्नदाताओं का सम्मान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Now, Ayodhya is all decked up to host Prime Minister Modi tomorrow, and among the projects to be unveiled by the Prime Minister include a redeveloped Ayodhya railway station and an airport. Listen in to Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh on the palpable excitement ahead of Prime Minister Modi's visit to the holy city tomorrow.
देखिए, जहाँ जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम, और जो राम को लाए हैं वह अयोध्या आए हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर स्वच्छ अयोध्या, सुंदर अयोध्या का एक संकल्प जो अयोध्या वासियों ने लिया है, अयोध्या के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लिया है, यहाँ के हमारे महापौर जी, हमारे विधायक जी गणों ने लिया है, हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता यहाँ अयोध्या के पूज्य साधु संत और जनता जनार्दन सब ने लिया है, उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इससे कड़ाके की ठंड, जब लाठियाँ चलती थी, जब गोलियाँ चलती थी, जब जेल भेजा जाता था, तब भी राम भक्त रुकता नहीं था। हम राम भक्त हैं, राम सेवक हैं, कार सेवक हैं, और हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान है, सबको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता। ये आप समझ आओ तो पूरी अतिरुचिर बनाई प्लास्टिक मुक्त अयोध्या को लेकर के। यह हमारे यहाँ नगर निगम में महापौर जी विशेष जो अभियान चला रहे हैं यहाँ पे, उसी का यह भी एक क्रम है। QS&THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. अक्सर मन में डर सा आता है, तुम बस एक हाथ बढ़ाओ, राह हम बना लेंगे। तुम बस मैदान तक जाओ, हम जीत को अपना लेंगे। लेट्स प्लेज टू हेल्प मेक इंडिया समर्थ बाय हंडे। मंजिल उनकी, साथ हमारा। hyundai.co.in पर लॉग इन करें। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। फिल्म अनुकूल नीति, सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन शूटिंग की अनुमति और सब्सिडी की सुविधा ने उत्तर प्रदेश को बनाया है देश का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। 80 फिल्मों को सब्सिडी के तौर पर दिए गए हैं 44 करोड़ रुपए। विभिन्न स्थानों पर 450 से अधिक फिल्मों की हुई है शूटिंग। स्थानीय कलाकारों को मिला है अपना हुनर दिखाने का अवसर। माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि सकारात्मक फिल्में समाज को जागरूक बनाने का आधार हैं।
इसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इंटरनेशनल फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। फिल्म स्टूडियो, होटल्स, मॉल्स, थीम पार्क, मिक्सिंग और रिकॉर्डिंग स्टूडियो जैसी सुविधाएं फिल्म उद्योग के माध्यम से आकर्षित करेंगी पूंजी निवेश। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। आपने सोमानी का नया रोल देखा? वही स्टाइल और रेंज सोमानी बाथवेयर में भी। सोमानी बाथवेयर। आइवरी या क्रीम? कोई भी बताओ ना। टाइल्स जो भी हो, लगाने के लिए MI के लेटिक्रीट टाइल एडेसिव। MY के लेटिक्रीट टाइल एडेसिव। फॉर्मूला ऐसा कि टाइल न टूटेगा न छूटेगा। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। Welcome back. Now, with just a few days to go for the Republic Day celebrations, parade rehearsals have begun near Delhi's India Gate and the Kartavya Path. Take a look. The countdown has begun for the 75th Republic Day celebrations. The parade rehearsals have begun in the national capital. The rehearsals began on Friday morning in Delhi's Kartavya Path and near India Gate. The ceremonial parade of the 75th Republic Day will be held at the historic Gandhi Maidan from 11th of January. India has announced that French President Emmanuel Macron will be the chief guest at this year's Republic Day celebrations. Bureau Report, Republic TV. As soon as Vallabhbhai Patel passed away, Nehru could not tolerate his cabinet colleague K.M. Munshi taking part in the Somnath temple reconstruction. So I think Nehru, in the name of secularism, wanted India to detach itself from its Hindu roots. Jawaharlal Nehru's tolerance of Hinduism vanished after Sardar Patel. He politically tolerated Hinduism and he was, according to me, a fake secularist who did not want Hinduism in India. Everything related to the Hindus, he only scorned. केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। पुलाची जाना था, बस छूट गई। अगली बस कब है? गुरुजी, सालों के बाद देख रहा हूँ तुमको। गुरुजी ने मुझे क्लीनर से ड्राइवर बनाया। आप पोलाची जा रहे हो ना? हाँ। चलिए, आपको ट्रक से छोड़ देंगे। अब ट्रक में सफर करना मुश्किल है। हमारा नया टाटा सिग्ना घर जैसा आरामदायक है। पोलाची में कोई खास काम? मैं नाना बन गया हूँ। बधाई हो। नातिन के लिए सोने के कड़े ले जा रहा हूँ। गुरुजी, खाना खा लेते हैं, फिर चलेंगे। यहाँ क्या मिलेगा? अपना ढाबा यही है। गुरुजी, पोलाची पहुँच गए। सफर का पता ही नहीं चला। वापसी में साथ चलेंगे? हाँ, मगर ट्रक मैं चलाऊंगा। टाटा मोटर्स ने बड़ी लगन और समझ से बनाया है एक नया सिग्ना कैबिन, जो आपके सेफ्टी, स्टोरेज और कंफर्ट की जरूरतों को पूरा करे। अब ड्राइवर प्रोडक्टिविटी होगी और भी ज्यादा। टाटा ट्रक्स, देश के ट्रक्स। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां।
हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, हालात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। भाई इतनी बड़ी टाइल, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स आप लोगों ने मुझे दी हैं। टाइल्स तो बड़े होने चाहिए। सुमानी मैक्स टाइल्स, टाइलों का सबसे बड़ा भाई। सुमानी मैक्स टाइल्स जमीन से जुड़े। दिल के सारे राज खोलता है जब ये डायमंड बोलता है। दिल की ऐसी बातों को डायमंड से बुलवाओ। मालाबार आओ और आप पाइए डायमंड वैल्यू पे अप टू 25% ऑफ ड्यूरिंग माइन डायमंड फेस्टिवल। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी, तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। As soon as Vallabhbhai Patel passed away, Nehru could not tolerate his cabinet colleague K.M. Munshi taking part in the Somnath temple reconstruction. So I think Nehru, in the name of secularism, wanted India to detach itself from its Hindu roots. Jawaharlal Nehru's tolerance of Hinduism vanished after Sardar Patel. He politically tolerated Hinduism, and he was, according to me, a fake secularist who did not want Hinduism in India. Everything related to the Hindus, he only scorned. The biggest story tonight, powered by Century Laminates. Viewers, you're watching the biggest story tonight. I'm Shivangi Shukla getting you the latest. And our top story comes from Ayodhya as we are counting down to the mega Ram Mandir inauguration. Our reporters are on ground getting us every detail and every update. We'll get to all those top updates. But first, the headlines we're tracking on the biggest story tonight. Massive breakthrough after 12 years, Centre and the ULFA ink the most historic peace deal. Mega rejig in JDU ahead of 2024 elections. Lavan Singh steps down, Nitish takes over as the chief.
India divided over prime ministerial face hurdle. Siddaramaiah pitches for Rahul now. Yogi Adityanath in Ayodhya takes stock of preparedness ahead of the mega Mandir inauguration. Politics continues to rage on in Ayodhya. Indy now objects to Ayodhya airport renaming. All eyes on Prime Minister's mega Ayodhya visit set to inaugurate mega projects. Alright viewers, we are live on the biggest story tonight, and we know the entire nation is gearing up for the mega Ram Mandir inauguration. On December 30th itself, we will see multiple inauguration of projects. My colleague Priyanka is in Ayodhya and she's getting us every flavor of Ayodhya. Here are a few exclusive reports filed by Priyanka as she has been there for the past few days getting us these updates. Just a few hours to go as the Prime Minister is all set to arrive in Ayodhya, and we can see how the city is completely decked up, and rightly so, because we are looking at 11,000 crore worth of projects that are going to be inaugurated and dedicated to the people of the nation, to the people of Ayodhya that you see around me. In fact, they are right now at the Lata Mangeshkar Chowk, an iconic chowk that has been also named after Lata Mangeshkar, where we 24/7 see perennially Lata Mangeshkar songs also ringing here, and that is why we look at how this has become a selfie point, so to speak, because a lot of people in fact have come here, are taking pictures with the decked up city of Ayodhya. They are taking pictures and selfies along with their family members, with their loved ones, with their friends, and what we see right now is the Lata Mangeshkar Chowk right behind me, where the flowers have been used to decorate the entire chowk. And we are looking at not just this chowk, but the entire city of Ayodhya, in fact, which has been completely decked up, and the flowers, in fact, being used to completely deck up the entire route of the road show as well that the Prime Minister is going to be taking. Because this is the Dharm Path. In fact, if we pan our cameras and show you how exactly the Dharm Path, in fact, has also been decked up completely with the lights that have been put up, with the kind of Ramayan depiction that was done on the Dharm Path along the way, along with the Surya Stambh that is standing tall along the entire Dharm Path. And not just that, there are flowers as well that have been used to deck up the entire road show venue and the road show route of the Prime Minister, and we are looking at heavy security arrangements that had been done through the day. The last minute in fact security checks that are being done by the officials who are going to be present here, making sure that everything goes without a hiccup altogether. Even now there are recce's being done, there are rounds being made of the officials, and but as of now, for the people of Ayodhya, for the city of Ayodhya, it is a time for celebration. It is a time for coming out and celebrating with their loved ones as to how Ayodhya, in fact, is getting a huge push for development, is getting a huge push for, in fact, the airport going to be inaugurated, the railway station going to be inaugurated, a huge developmental push to Ayodhya, which does not just anymore exist in a vacuum, but is connected to rest of the country, to the rest of the world. With video journalist Vipin Moria, I'm Priyanka Sharma for Republic. Maharshi Valmiki Airport here in Ayodhya is all set to be inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi in less than 24 hours from now. In fact, he will be arriving right here at the Ayodhya Airport, which you can see right behind me. As you can also see how the workers are hard at work carrying out the last minute preparation, making sure that each and every detail of the airport is in place. And as per the technical aspects of the airport as well are in place. This is essentially the runway that we are showing you of the entire airport. And let us also tell you about how the preparation for the Chief Minister and also for the Prime Minister here in Ayodhya are also being carried out. You can see how the entire gateway towards the airport is also decked up. Even as you go inside, you can see how flower arrangements have been made. And of course, welcoming the Prime Minister, these kind of posters have also
been put up across the entire city of Ayodhya, but specifically so here at the Ayodhya airport. As we can see how this airport in fact also connects the Sultanpur road, and there are at least 6 lanes of highway that also connects this particular airport, keeping in mind how the huge push for the government has been for connectivity of Ayodhya, and we can see how the preparations are also being carried out as well. You can see how the posters of the Prime Minister and the Chief Minister Yogi Adityanath are in place, highlighting the fact that this is the double engine ki sarkar. Remember that this is the kind of slogan that had been given by the Prime Minister and the Chief Minister during the last UP elections as well, and that essentially had been the entire campaign of the BJP, of the Prime Minister, of the Chief Minister Yogi Adityanath, and we see that happening now on the ground here at the Ayodhya airport as the decorations are in place. Even on the overbridge here, we can see that flower buckets have been kept here, flower baskets have been kept here, flower arrangements are being made, and how people are being welcomed to the city of Ayodhya. This essentially shows us a new horizon for the city of Ayodhya when it comes to the developmental push, because we have seen over the last several years how airport have now going to be inaugurated, how the railway station has now been renamed, and the roads as well, the highways, the roads, the connectivity, then be it the Rampath, the 14-kilometer stretch that in fact joins Shahadatganj to Ayodhya, or then be it Sultanpur to the Ayodhya airport, the 6-lane highway that is being developed for that. This essentially tells us the kind of developmental push that is being given by the BJP to Ayodhya city. Specifically so, tomorrow of course is going to be a very interesting and a very important day as the Prime Minister arrives at the Ayodhya airport that you can see right behind me, and he will be inaugurating the entire city, or in fact the Ayodhya airport, and then will also see the commercial starting of the flights from 6th of January that will be operational for Delhi first, and then subsequently for Ahmedabad and Mumbai on 11th January as well. So these are some of the developmental push and connectivity push that Ayodhya is also getting. With video journalist Bipin Mori, I'm Priyanka Sharma for Republic. Let's get on a word from some of them to understand what exactly is the sentiment of Ayodhya right now. Thank you so much हमसे बात करने के लिए. आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं लता मंगेशकर चौक पे. किस तरह से यहाँ पे एकदम सेलिब्रेशन का माहौल लग रहा है, लोग अपनी अपनी सेल्फीज ले रहे हैं, पूरी तरह से अयोध्या सिटी को एकदम चमका दिया है, एकदम सजा दिया है. बिल्कुल. अभी ये हमारे मोदी जी और योगी जी का जो भी आना है, आगमन के अवसर में ये प्रकाशित हुआ है पूरा अयोध्या. अयोध्या का एक प्रकार से अब जन्म हो रहा है. हमारे राम प्रभु फिर से इस अयोध्या में लौटेंगे और इसी खुशी में ये माहौल है. और हम लोग सुल्तानपुर से आए हैं, हम सुल्तानपुर से आए हुए हैं. बाकी बहुत सारी धरती पे लोग आए हुए हैं. ये अयोध्या है, राम जन्मभूमि है, तो यहाँ दर्शन के प्राप्त, आशीर्वाद प्राप्त, तो इसके उपलक्ष्य में सभी उपस्थित हैं, हम भी उपस्थित हैं. और अयोध्या का मतलब बस अब राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वो तो है ही, बहुत ही भव्य मंदिर बनने वाला है, पर खाली मंदिर की बात नहीं है. किस तरह से जो डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, एयरपोर्ट अब कल मोदी जी आने वाले हैं, यहाँ पर इनॉग्रेशन करने वाले हैं, रेलवे स्टेशन जैसे आप बता रहे हैं कि वो होने वाला है, उस हिसाब से आप कैसे देखते हैं कि अयोध्या नगरी अब एक वैक्यूम में नहीं है, लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है, पूरी जो देश है देश के साथ में जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है. जी मैम, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ पैटर्न को बहुत तेजी बढ़ावा मिल रहा है. सबसे बड़ी चीज़ कुछ ये हमारे ठीक पीछे रामपैड़ी है जहाँ भव्य दीपोत्सव होता है. उसके पहले वहाँ की स्थिति ये थी कि वहाँ मछलियाँ मरी हुई रहती थी, तो पानी नहीं बहता था, कभी लोग उधर जाना नहीं पसंद करते. आज उसकी स्थिति ये है कि वहाँ लाखों दिए जलते हैं और हर साल अपना रिकॉर्ड तोड़ते हैं. उससे पैटर्न बढ़ रहा है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, अयोध्या स्टेशन जाके आप देख लीजिए, उससे कायाकल्प हो गया है, एयरपोर्ट चालू होने जा रहा है. इससे पैटर्न को बहुत तेज बढ़ावा मिला, जिससे यहाँ पे बहुत ढेर सारे रोजगार हो रहे हैं. होम स्टे जैसी योजनाएं सरकार ला रही है, हम लोग के घरों को होम स्टे में लगाया जा रहा है. तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो इसका फायदा यहाँ के लोकल के लोगों को भी मिल रहा है और बाहर से भी लोग आकर के यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं. सबसे बड़ी चीज ये है. ये बिल्कुल सही कहा आपने. जैसे हम भी आते थे 2-3 साल पहले तक तो सिंगल लेन रोड्स होती थी, और अब हमें देखने को मिल रहा है 4 लेन हाईवेज भी हमको देखने. यही जिस चौराहे पे आप खड़ी हैं, यही दिशा अगर आप फोटो रखी हो, अगर कोई तो उसको देख लीजिए, और आज खुद को नहीं पहचान पाएंगे आप इसी चौराहे पे खड़ी थी, आप जिस चौराहे पे आज आप खड़ी हैं. आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे कि किस तरह से यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा मिल रही है, लोगों को काम मिल रहा है, जॉब्स मिल रही हैं, किस तरह से आप देखते हैं? बहुत बहुत अच्छा काम हो रहा है और आने वाले समय में अच्छा काम होगा. एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम. Entire Ayodhya, the ground is very loose and it is soft. Soft ground is itself is a very soft, so that actually
all the technical people, just like IITians and professors, a lot of experts actually. They sat together and designed a special design actually they have made, and finally they come to conclusion, and they have selected the Bangalore granite, which is available abundantly actually in Bangalore, not a problem, which meets the required properties for the basement actually. And granite is used a lot in this temple as well, especially from Bengaluru. And if you could speak to us a little bit about the plinth construction, because we were talking about how the brainstorming sessions used to go and how professors from IITs had been called in as to how to tackle this situation, because the soil, I believe, was not conducive to that kind of construction. Exactly. So if you could speak to us a little bit about the roadblocks that you faced, or the entire planning committee had also faced, and how exactly granite is also being used in the plinth. One thing I can tell you, because I was not part of the foundation actually, but the plinth part, I was taking care of that actually. Okay, totally 17,500 blocks has been used for the plinth, and each block is the dimension of it is 2.5 feet by 3 feet by 5 feet actually. Okay, I can say almost 11,000 blocks from Hanuman granite itself they have supplied actually, and a few more vendors from Bangalore, other companies actually, and from few blocks from Andhra also they have supplied actually. Okay. So if I could also talk to you about how there's not one piece of iron or steel also being used in the construction, if you could speak to us a little bit about that. So as per our Shilpa Shastra and Sthapatya Veda, we should not use iron in the temple construction. So the copper can be used actually, but iron should not be used. That's why a single piece of iron is not used in the construction of the Ram temple actually. And viewers, the other big story we're tracking right now, Nitish Kumar has been re-elected as the president of Bihar's ruling Janata Dal at a meeting of the party's national executive in Delhi. Now, the Bihar chief minister was reappointed minutes after his aide Lalan Singh stepped down, ending weeks of frenzied speculation. The big development comes ahead of the elections, and my colleague Harsha has been on the ground and she has been getting us all these reports. अरे धूप चलिए, अरे वहाँ चलिए ना, धूप में चलिए, धूप में चलिए। हम भी थे वहाँ जब उन्होंने प्रस्ताव दिया था। तो नीतीश कुमार कब कार्यभार संभालेंगे? राष्ट्रीय कुमार जी ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया तो ये कहा जाए कि आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नीतीश कुमार है। अभी तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। और विजय जी, कारण क्या रहे ललन सिंह के इस्तीफे देने? ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था, और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। विजय जी, नाराजगी की बात थी ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों के बीच में, क्या वो एक मुख्य वजह रही ललन सिंह के इस्तीफे की? किस चीज की? ललन सिंह के इस्तीफे की मुख्य वजह क्या दोनों के बीच में जो नाराजगी है वो भी एक मुख्य वजह रही? नाराजगी? बिल्कुल। ये तो नया शब्द आप कहाँ से ला रही है? ये इस शब्द का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। नहीं, पहले से तय नहीं था, चूँकि आदरणीय नेता ललन बाबू ने उन्होंने जाहिर की, चूँकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे बहुत व्यस्तता है और पार्टी के संगठन पूरे देश में खड़ा करना है, उसमें मैं पूरी समय नहीं दे पाऊंगा। इसलिए सम्मानित नेता नीतीश कुमार जी से आग्रह किए, जो आप स्वयं इसको संभालने का काम कीजिए, और कर्तव्य ध्वनि से सभी ने स्वागत किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उसे स्वीकार भी करने का किया। अभी नेशनल काउंसिल की बैठक हुई, उसमें मुहर ले जाएगा। एक और बात महेश्वर जी, एक बात लगातार कही जा रही है कि अब बीजेपी भी ये बात खुल करके कह रही है कि जो नज़दीकियां थी ललन सिंह की आरजेडी से, वो एक मुख्य कारण रहा, क्योंकि नीतीश कुमार नाराज थे इस बात से, उनकी बढ़ती नज़दीकियां आरजेडी से, और वो एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से ललन सिंह के इस्तीफे की भी चर्चा सुखबुगाहट पटना से लेकर दिल्ली तक काफ़ी दिनों से थी। नहीं, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई हमारा शीर्ष नेतृत्व न बोला है, न हम लोगों को कोई भी MP MLA बोला है।
यह सिर्फ मीडिया की उपज थी। हम लोगों को कहीं कोई नहीं थी। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और ललन बाबू में दोनों में इतनी मित्रता है, और जो पार्टी का फाउंडर मेंबर है दोनों आदमी, पार्टी के बनाने में, पार्टी के बढ़ाने में आदरणीय ललन बाबू की बहुत ही बढ़ चढ़ की हिस्सा रही है। इसलिए ललन बाबू पर कोई शंका नहीं कर सकता है। आज से ही नीतीश कुमार अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। नेशनल काउंसिल की बैठक होगी, उसमें मुहर लग जाएगी, उसके बाद संभालेंगे। निवेश जी, एक सवाल बस लेना चाहूंगी। आज जो फैसला हुआ, ललन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा और नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रपोजल दिया, क्या इसकी सुगबुगाहट, इसकी चर्चा क्या कल ही हो चुकी थी? तमाम चीजें पहले ही तय थी? अगर आपको नहीं मालूम था कल कि कल क्या क्या हुआ था, तो हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? हाउ विल वी कम टू नो? वी हैव कम दिस मॉर्निंग। यू आर हियर इन दिल्ली सिंस लॉन्ग, सो यू मस्ट बी हैविंग मोर इन्फॉर्मेशन as to what was to happen. But there was already reports of Lalan Singh quitting from his designation as national president, and it was already iterated also that all these things will formally be announced in the national executive meeting. Could we say that the people, the veterans inside JDU already knew about it? Well, it was in the air. Definitely it was there in the air. And he had himself announced, Honorable Rajiv Ranjan Singh, Lalan Singh had himself announced that he wants to contest elections. He wants to go there in the field and work in his constituency. And that's why he wants to quit the post. Well, yes, I'm joined by Lalan Saraf, who's an MLC in the Bihar Vidhan Parishad and a very, very close confidant of Nitish Kumar. Nitish Kumar trusts him a lot. In fact, he is the eyes and ears of Nitish Kumar. Lalan Saraf जी, आप मीटिंग में मौजूद थे, क्या क्या बातें हुई? हम लोग तो पहले से बता ही रहे थे कि ललन जी जा रहे हैं, नीतीश जी आ रहे हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इच्छा व्यक्त की गई है, उसकी संपुष्टि नेशनल काउंसिल की बैठक में होनी है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस पद से मैं मुक्त होना चाहता हूं और आप इस पद को संभालिए। तो मेरा ये मानना है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए और इंडिया गठबंधन का जो धुरी बन के उभरे हैं नीतीश कुमार जी, ये बहुत ही आवश्यक था और ये ससमय सही फैसला है। इससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। नीतीश जी ने एक्सेप्ट कर लिया प्रेसिडेंटशिप का पोस्ट और क्या कहा? नीतीश कुमार जी का कहना था कि बहुत ही मुझ पर प्रेशर पड़ा और चूंकि इन्हें चुनाव भी लड़ना है तो मैंने स्वीकार कर लिया है, मैंने अपनी सहमति दे दी है और यदि राष्ट्रीय परिषद की संपुष्टि हो गई तो मैं इस पद को संभालूंगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं लोगों को कार्यभार दूंगा, अलग अलग कार्यभार दूंगा और सबको काम करना पड़ेगा और सबने काम करने की सहमति दी है। और क्या वर्किंग प्रेसिडेंट सब भी बनाए जाएंगे डिसेंट्रलाइज? ऐसी कोई नहीं है, काम वो बांटेंगे, लोगों को अलग अलग काम देंगे। और सबसे बड़ी बात कि ललन सराफ जी, ललन सिंह का 2 महीने पहले चुनाव के हटना ये अनायास नहीं है। ये एक तरीके से देखा जाए तो राजनीति में गलियारे में बात चल रही थी कि लालू जी से क्लोज हो गए, पार्टी के विधायक टूट रहे हैं, जैसे आरसीपी सिंह पर आरोप लगा था। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में नया पॉलिटिकल रियलाइनमेंट हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी बातें आई है, आप जानते हैं कि भाजपा जो मिथ्या और भ्रामक दुष्प्रचार करती है, मुझे उसी का ये नतीजा लगता है। ललन सिंह जी का अपना चुनाव है और उसके साथ ही साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को। हमारे 25 प्रदेश में संगठन है, 25 प्रदेशों में जाना और हर जगह चुनाव का काम करना और खुद चुनाव लड़ना, यही कारण होगा। All right, viewers, so we see the big story coming in where Nitish Kumar has been re-elected as the president of Bihar's ruling Janata Dal United at a meeting, and after much speculation that whether Lalan Singh will step down, Republic TV had got it right, and that's exactly what's happened. Lalan Singh has stepped down and Nitish Kumar is the president of the JDU. Taking a very short break, much more coming up on the other side. Powered by Century Ply Club Prime. रहो बेफिकर, AMFI Mutual Funds सही है। Co-powered by Sera. This is your space. Play it your way. Philips Smart Wi-Fi LED lights. Smarter generation की smart lights.
QS and THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. Gujarat makes business sense. The vibrant Gujarat Global Summit has created a dynamic, quality-focused and growth-oriented ecosystem of MSMEs to enable India achieve global competitiveness. Gujarat is developing MSMEs to be reliable partners. It's at the forefront of providing holistic support, being proactive in policy making, setting up dedicated institutional structures, and promoting women entrepreneurship. For over 20 years, Gujarat has played a pivotal role in India's development and now heralded as the growth engine of Viksit Bharat at 2047. Vibrant Gujarat Global Summit 2024. Gateway to the future. 3 से 4 व्हीलर में अपग्रेड तो करना है, पर इसमें से क्या खास बात है? इसमें एक खासियत हो तो बताएं। टाटा इस गोल्ड पेट्रोल 6 में है दमदार इंजन जो दे बढ़िया पिकअप, बड़ी और स्ट्रॉन्ग रोड बॉडी और मेंटेनेंस एकदम कम। तो अब सोचो, समझो और टाटा इस गोल्ड पेट्रोल 6 लो। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने Welcome back. One of the biggest stories of the day, in fact, I would say the top headline of the day, has been the historic agreement between the ULFA, the Assam government, and the central government. The ULFA has been an insurgent group operating out of Assam with bases outside Assam for many, many years, in fact, decades. Very few people expected that there would be a comprehensive peace agreement with the ULFA that would be possible, which would include the most important names in the ULFA leadership. So I personally think this is a huge moment. And joining me is Himanta Biswa Sharma, the Chief Minister of Assam, who has been very instrumental in putting together what I can only call, as someone from Assam, a historic agreement which will pave the way for a new chapter in the development of Assam and the future of Assam, and in fact the future of the entire Northeast. Mr. Himanta Biswa Sharma, many, many congratulations. This was not expected. Thank you so much. It's a wonderful New Year Eve present that you have given to the people of Assam and to the people of the country. So firstly, could you explain the significance of this agreement, and do you have the broad consensus of the entire ULFA leadership while negotiating this agreement? Arnab, as you are from Assam, you know that Alpha agitation started in 1987. Since then, 4,800 innocent people lost their life at the hands of Alpha. 2,160 Alpha cadre were killed either in encounter or in the clashes amongst them. Thirdly, more than 700 security personnel martyred during this entire period.
2,500 plus people were kidnapped, and whereabouts of many of those people are still